Harry Brook has been an absolute star for England since they've come here in Pakistan. 3 back-to-back hundreds for him. He's absolutely dominated the Pakistan bowling attack, and he seems to love playing in Pakistan, but was well supported by somebody like Ben Foakes with another 50 as well. At this point of time, I think the match is perhaps hanging in the balance. Maybe England just ahead. They made 354 in response to Pakistan's 304. From a Pakistan perspective, at this point of time, they've not lost a wicket. They are 21 for 0, but they trail by 29 runs. Hello and welcome to the Inverex Solar Energy Pit Side Show. Now, this match is definitely getting interesting. 29 runs is the trail that we're talking about, and there is a lot to talk about and look forward to in tomorrow's game. I've got with me a special guest. Mohammad Yusuf, batting coach of the Pakistan cricket team, joins us alongside Arooj Mumtaz. Yusuf bhai, आज का दिन अगर आप देखें, from a Pakistan perspective, तो क्या कहेंगे? पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? आगे हैं, पीछे हैं, बीच में है, कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो 50 रन्स की लीड हो गई है, ये होनी नहीं चाहिए थी जिस तरह हमने विकेटें ली हैं शुरू में। लेकिन ब्रुक्स और बेन फॉक्स जैसे खेले हैं, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है दोनों ने। स्पेशली ब्रुक्स थ्रू आउट द सीरीज़ बहुत अच्छा खेल रहा है। बेन फॉक्स बहुत ही डेंजरस लग रहा था, क्योंकि वो जिस तरह की बैटिंग कर रहा था, वो टीजिंग बैटिंग थी, वो मुश्किल कर रहा था बॉलर्स के लिए। और बाद में जो 75 रन्स बनाए हैं टेल एंडर्स ने, वो भी हमारे लिए बहुत टीजिंग है। अगर आप देखें कि वुड ने दोबारा वही 36 रन जैसे मुल्तान में बनाए थे, आज फिर उसने बना दिए हैं। और ये जो ओले रॉबिन्सन 29 रन्स वो कर गया, ये हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। और मेरा ख़्याल है कि ये थोड़ा सा टीजिंग है हमारे लिए। ये रुक जाते और हम अगर लीड ना भी लेते, अगर बराबर भी ज़्यादा, वो भी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन कल इंशाल्लाह, आज जैसे लड़कों ने 8-9 ओवर खेले हैं, कल हम इंशाल्लाह और बेहतर खेल के इतने रन्स करें ताकि इनको अंडर प्रेशर लें, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं इंग्लैंड वाले, वो रन्स की तरफ जाते हैं। ये कुछ पिछले 2-3 सीरीज़ में इन्होंने शुरू किया, उसमें काफ़ी कामयाब हैं वो। ठीक है, अच्छा ये बताएं, फ्रॉम अ पाकिस्तान पर्सपेक्टिव एक चीज़ जो बहुत नज़र आई है, ऐसा हुआ है थ्रू आउट द सीरीज दैट मोमेंट्स आए हैं मैच में जब लगा है कि पाकिस्तान के हाथ में है मैच, आई कैन कोट वेरियस मोमेंट्स, एंड ऑफ Pakistan losing their wickets in key moments. We saw that with somebody like Saud Shakil. Debatable है obviously उनकी विकेट कैसे गिरी पिछले मैच में, फिर इमामुल हक at one point of the game. There are various examples and I'm sure you know as well. ऐसा क्यों होता है कि क्रंच मोमेंट्स में जब लगता है कि कंट्रोल में है मैच, आज भी ऐसा लगा एक पॉइंट पे जब विकेटें गिर रही थी इंग्लैंड के एंड से, कि शायद पाकिस्तान के मैच में हाथ में मैच कंट्रोल में आ गया है, बट देन अगेन आगे एक पार्टनरशिप लग गई। ये ऐसा क्यों? अच्छा, एक्सक्यूज़ तो कोई है ही नहीं, क्रिकेट में एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि लक ज़्यादा फेवर उनकी कर रही है। लेकिन ये अच्छा भी बहुत खेल रहे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छा भी खेल रहे हैं, लक भी फेवर में जा रही है। बहुत सी चीज़ें आज देखें, कई दफ़ा वो बहुत क्लोज बचे हैं और हमें कोई थोड़ा सा भी होता हम आउट हो जाते हैं। जैसे पीछे से 4-5 तो पीछे से कैच आउट हो गए हमारे। और जैसे आपने कहा खुद ही कि जब कोई पार्टनरशिप लगती है, अचानक से आउट हो जाता है कोई, और सॉफ्ट डिसमिसल होते हैं हमारे। बहुत सारे आउट ऐसे हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्लेयर्स कुछ अनएक्सपीरियंस हैं, लेकिन अगर अदर साइड देखा जाए, उनका जो ये ब्रुक्स है वो भी बहुत अनएक्सपीरियंस है। 4 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन बहुत प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा है वो। उसकी अगर टेक्निक देखी जाए तो बहुत सॉलिड टेक्निक है। बैट और हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा उसका फुटवर्क बहुत ज़बरदस्त है। अब देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका एक्सपीरियंस हमारी टीम से बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी चीज़ें ये है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दोबारा नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि ये आप खेल के ही बेहतर होते हैं। और जिस तरह की हमारी अगर बॉलिंग साइड देखी जाए तो वो भी बहुत अनएक्सपीरियंस है, बैटिंग साइड भी देखी जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो फेवर में उनकी ज़्यादा हैं, हमारे कम है।
लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते क्योंकि एक इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान की तरह से सब खेल रहे हैं हम। हमें प्रॉपर चीज़ें करनी है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। और जी, अरूज। अ, यूसुफ भाई, आपने खुद ही बात करी कि एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, और हम जो तरीक़ेकार इंग्लैंड ने अपनाया है उसको आप कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन लाएँ टेस्ट क्रिकेट के अंदर। वो बेसबॉल नहीं चाहते कि हम कहें, बट अगर हम उस टर्म को ले भी लें, कितना प्लेयर डिपेंडेंट है, क्योंकि इंग्लैंड को उस तरीके की क्रिकेट खेलने में उनके पास उस तरह के प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं। क्या पाकिस्तान के पास, आपको लगता है, उस चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए प्लेयर्स हैं? क्या हम उस किस्म की क्रिकेट खेल सकते हैं? क्या वो हमारा तरीका है कि वी आर मोर हैप्पियर एंड कंफर्टेबल प्लेइंग आवर स्टाइल ऑफ क्रिकेट? नहीं, देखिए, अगर आप देखें इस सीरीज़ में हमारा रन रेट जो है वो 3-5 से ऊपर ही जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि कल जो पहला दिन हम खेले हैं, पहले हाफ में कोई 4.30 ऐसे था, आखिर में भी ज़्यादा ही था। जो लास्ट सीरीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेली उसके मुकाबले में देखें, लेकिन इंग्लैंड के सामने बहुत कम लगता है क्योंकि वो 6 से भी गए हैं, 7 पे भी गए हैं। आज फिर वो 4 साढ़े 4 पर गए हैं, हालांकि विकटें भी गिरती रही, उनकी 4 विकटें जल्दी भी गिर गई हैं। अब मेरा ख्याल है कि एकदम उनका भी नहीं हुआ, उन्होंने भी टाइम लिया। और मेरा ख्याल है कि हमारे प्लेयर्स भी ये चाहते हैं, हम और स्पोर्टिंग स्टाफ भी ये चाहता है, मैनेजमेंट भी चाहती है कि हम भी ऐसी क्रिकेट खेलें कि तेज़ खेलें, लेकिन प्रॉपर। क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी है ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी है कि वो जो तेज क्रिकेट खेलते हैं उसमें उनके रिजल्ट्स भी आए, 9 में से 8 टेस्ट मैच उस तरीके से वो जीते भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मैं भी ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, ये नहीं कि आंखें बंद करके घुमा रहे हैं। अगर उनकी आप टेक्निक देखें, उनकी शॉट सिलेक्शन देखें, अगर उनकी स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप देखें, उनकी वो जो हेड है वो का है, उनकी पोजीशन का है, ये सारी चीज़ें अकाउंट करें। ये नहीं कि बस आके उन्होंने चलानी शुरू कर दी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमें ये सारी चीज़ें हमें भी करनी है और हमें भी ऐसे ही क्रिकेट खेलनी चाहिए। और हमारी मैनेजमेंट की तरफ से किसी को रोक टोक नहीं है कि आप जाके ठक्का लगाएं। हर प्लेयर को हम ये कहते हैं कि आपने अपनी गेम खेलनी है, सिचुएशन को सामने रख के, जो भी सिचुएशन है उसको सामने रख के आप अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक खेलना है। मेरी तरफ से तो कभी किसी को नहीं रोका गया कि आप ऐसे खेलें वैसे खेलें। और मेरा ख्याल है हेड कोच कप्तान की तरफ से भी ऐसी कोई किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं जाती कि वो रोकें ज़बरदस्ती। हाँ, सारे इंटरनेशनल खेल रहे हैं, सब फर्स्ट क्लास खेलते हुए आ रहे हैं, उनको भी पता है कौन सी सिचुएशन है। हैरी ब्रुक्स को मेरा ख्याल है कोई मैसेज नहीं जाता होगा, सब अपनी गेम खेल रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि मतलब ऑब्वियसली दीज आर ऑल एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसकी आपने बात की, बट कुछ पॉजिटिव्स भी हैं पाकिस्तान के लिए। फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला शफीक या फिर साउथ शकील, अगर यंग बैटर्स में देखा जाए तो ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लगता है कि फ्यूचर हैं पाकिस्तान की बैटिंग के। तो आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? या सलमान आगा भी हैं, ही इज़ ऑल्सो स्कोर्ड 50। तो ये जो तीनों आपके पास जो आ रहे हैं, इनकी किस तरह से मुख्तलिफ है? सबसे ज़्यादा आपकी आइज़ में कौन है प्रॉमिसिंग, जिसको आप कहेंगे कि ये टीम का बैकबोन होगा, जिस तरह अजहर अली थे, आप थे, लाइक उस तरह के प्लेयर्स? देखिए, अब्दुल्ला और ये जो अपना साउथ शकील है, ये दोनों बहुत की लग रहे हैं। और मुझे साउथ शकील की अगर अगेंस्ट स्पिन देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त खेला, उसका फुटवर्क बहुत ज़बरदस्त था, मेंटली स्ट्रांग है और अपना नर्व्स पे होल्ड करता है। वो प्रॉपर लग रहा होता है कि नज़र आ रहा होता है कि वो जो खेलना चाह रहा है वही खेल रहा है। और बहुत मैं समझता हूँ कि उसका ब्राइट फ्यूचर है और लंबा खेलेगा पाकिस्तान के लिए। और क्योंकि अभी बिल्कुल स्लो विकेट्स हैं, टर्निंग साइड पर हैं, फास्ट बॉलिंग पे इतना कोई चीज़ नज़र नहीं आई किसी की भी। लेकिन जैसे जैसे खेलता जाएगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको लर्न, वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो रोज़ लर्न करना है जब तक आप खेल रहे हैं। इवन मेरी अजहर अली से बात हो रही थी, वो कह रहा अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो ये एक अच्छा साइन होता है अभी किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए, कि वो अपनी रिटायरमेंट तक सीख रहा है। क्योंकि जब इंसान कहता है ना मैं सीख गया हूँ, फिर वो रुक जाता है। तो जितने भी प्लेयर्स हैं और वो कोशिश भी करते हैं लर्न करने की, लेकिन जितनी जल्दी लर्न कर लें इंटरनेशनल लेवल पर, उतना आपको फ़ायदा होता है और टीम को भी। अच्छा, ऑब्वियसली व्हेन यू वर प्लेइंग इन योर टाइम्स, जब आप खेल रहे थे, इतनी आपकी अच्छी अच्छी इनिंग्स थी जो पाकिस्तान के लिए आपने खेली, ज़बरदस्त किस्म की डबल 100 इन इंग्लैंड, आई रिमेंबर। इफ़ यू कंपेयर दैट ईरा टू दिस ईरा, उस वक्त जो माइंडसेट था एज अ प्लेयर, क्या उस वक्त भी कोचिंग स्टाफ आपको मैसेज देते थे कि जाकर ठक्का लगाओ, या फिर ये था कि अपनी गेम खेलो? या अब अगर आप कंपेयर करें अब के माइंडसेट से, सो दैट ईरा वर्सेस अब, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस?
कह सकते हैं जब मैं शुरू में आया था तो कुछ मैनेजमेंट कोचेस कहते थे कि इस तरह खेले, लेकिन जैसे जैसे मैं खेलता गया कोचेस भी चेंज, जैसे बॉब वुलमर के टाइम से ज़रा चेंजिंग आई, और कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली जाती थी कि आप अंदर चलेंगे, क्योंकि हम कमरा इम्तिहान में हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, जब आप आ जाते हैं आप कमरा इम्तिहान में आ जाते हैं। आप जो जिस टीचर से पढ़ा वो अंदर आके नहीं बता सकता कि बेटा ये लिखो या ये करो, ऐसे नहीं हो सकता। तैयारी करके आना है, और जो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग होती है वो आप कर सकते हैं। ट्यूनिंग है, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं सही हो सकती हैं, या आपको हर वक्त ये नहीं पता इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये नहीं, ये नहीं है। अब आपने खुद करना है और सीखना है। और मैं लकी था कि मैं ऐसे प्लेयर्स के अंदर खेला हूँ जो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत हाईली वर्ल्ड प्लेयर थे उस टाइम। इंजमाम उल हक, सईद अनवर, इवन मलक साहब के साथ मैं खेला हूँ एक आधी सीरीज। एजाज भाई बहुत अच्छा खेलते थे। और फास्ट बॉलिंग में तो वर्ल्ड बेस्ट आप कह लेंगे, वसीम, वकार, ये सारे थे। स्पिन में सकलैन, मुशी भाई, हमारी टीम बहुत बड़ी थी, तो सीखने का मौका बहुत था। और जिस तरह वो लेके टीम को चलते थे, मुश्किल टाइम में टीम को भी निकालते थे, अपने रन्स भी करते थे। और इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, जो सईद भाई जैसे खेलते थे, मेरा ख्याल है वो उस टाइम भी ऐसे ही खेलते थे जैसे ये खेलते हैं, कि वो बॉलर्स उनसे तंग आए होते थे, इस तरह की क्रिकेट खेलते थे। तो मैं लकी था कि मैं ऐसे लोगों के साथ खेला हूँ, उनको देख के सीखा, और उन जैसे तो नहीं बन सके, लेकिन कहीं ना कहीं पहुँच गए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, सईद अनवर खान ने हमें याद करा दी, व्हाट अ प्लेयर ही वाज जस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग। अच्छा, अब कल के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या टारगेट होगा जिससे आप सेटिस्फाइड होंगे, कितने पे आपको लगता है कि एक वो सवाल भी आ जाता है कि फोर्थ इनिंग्स में ऑब्वियसली वो बैटिंग करेंगे, तो फ्रॉम अ पाकिस्तान पर्सपेक्टिव किस परफॉर्मेंस से आप एज अ कोच सेटिस्फाइड होंगे ओवरऑल, जो अब सिचुएशन नजर आ रही? देखिए, एटलीस्ट 300 रन्स तक का तो उन्हें टारगेट देना चाहिए हमें फोर्थ इनिंग में, क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं। और एक चीज़ याद रखें कि हमने भी बहुत क्रिकेट खेली है पाकिस्तान में, हमारी विकेट स्लो से स्लो होती जाती हैं। और मुझे लगता है कहीं हमारे जो मट्टी है उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप इंडिया बांग्लादेश में देखें तो जैसे डे बाय डे मैच गुजरते हैं, बॉल टर्न, शार्प टर्न होना शुरू हो जाता है, बल्कि पहले घंटे से शुरू हुआ था इंडिया में और बांग्लादेश में। यहाँ अजीब है, थोड़ा सा पहले दिन होता है, उसके बाद स्लो विकेट होना चाहिए। अगर आज देखें तो आज कल से बाउंस नीचे तक और लो हो गया। लो था। तो हैवी रोल लेते हैं तो यहाँ टूटती नहीं और जुड़ जाती है। अजीब मट्टी का कोई चक्कर है। 300 रन्स भी मेरा ख्याल, अगर वैसी विकटें हो इंडिया बांग्लादेश से, तो 300 रन्स बहुत हैं। देखते हैं अब ये क्या होता है, मट्टी विकेट कैसे खेलती है। हैवी रोल लेने के बाद वो हैवी रोल लेंगे, लाजमी बात वो हैवी रोल लेंगे ताकि स्लो हो जाए। 300 रन्स तो एटलीस्ट हमें उनके ऊपर करने चाहिए, एटलीस्ट 50 की लीड, उसके बाद 300। इंशाल्लाह लड़कों में इतनी एबिलिटी है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड है, और उन्होंने किया भी। अगर आप देखें इस सीरीज़ में बैट्समैनों ने 650 के ऊपर 625 भी किया है। और फिर जो आखिरी इनिंग हम मुल्तान में खेल रहे थे, 350 चेस कर रहे थे, 27 रन से हारे हैं। और उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई, अदरवाइज़ वो मैच भी हम जीत सकते थे। तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत हैं। ये तो आप इस टीम को क्रेडिट भी दें, क्योंकि यंग टीम है। आप सिर्फ देखें बाबर के 45 टेस्ट मैच हैं या अजहर अली के 97, बाकी सब में है 20-30 के नीचे हैं। उनके 500 550 टेस्ट मैचेस हैं, तो उनको एक एज ये भी जाता है। और पीछे से वो एक अच्छा रिकॉर्ड लेके आ रहे थे, जिस तरह वो 2 होम सीरीज़ जीते थे डोमिनेट करके बैटिंग की तरफ से, तो इसी तरह इधर भी वो खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि इस टेस्ट मैच में हम जीतेंगे। चलें, ठीक है, उम्मीद करते हैं एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर पाकिस्तान। लाइक यू सेड, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स एज वेल। जो बैटिंग में जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया, दे प्रोबब्ली गोइंग टू कैरी द बैट फॉर पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, होपफुली। बट थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट्स वंस अगेन, यूसुफ भाई। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू on our show, Pitch Side Show, Inverex Solar Energy Pitch Side Show. But on that note, we'll be taking a short break, and when we do come back, we'll be joined by David Kawa.
back at the Inverix Solar Energy Pitchside Show, and I've just been joined by a very smiling David Gower. What's the joke, David? It's a ruse. I mean, she just cracks me up each and every time. She's so mischievous. Right. If the pleasantries are over, can we get back to talking about cricket? Well, if we must. We must. Indeed, yes. All right. So, from an England perspective, always nice to hear your thoughts. But great performance by Harry Brook. He loves Pakistan. It's pretty much like you. You know, you love Pakistan. He's exactly like you. You know, you love being in Pakistan. He loves being in Pakistan. Indeed. If I can be tongue-in-cheek for a moment, well, one more moment. Obviously, the low point of the day was when Harry Brook went past my runs total in 1984. But he deserves it. He has played absolutely beautifully. 300s in the series, a couple of 50s, one failure. It's an outstanding effort from a very, very talented batsman. And as you say, he's had experience of Pakistan before with PSL. He makes runs in PSL for fun as well. He's obviously enjoying himself here. He's in great form. And he's learnt, I'm sure he's learnt things as well, because, for instance, that one mistake was against Abrar first innings at Multan. Since then, he's played him really, really well. And it's just that speed of movement, the speed of decision-making, the feet, the hands, everything in perfect synchronicity, there's a word for you, which just makes him so good at the moment. Right. I'll look into my English dictionary to see where that one stands. Aruj, there's been this one issue with Pakistan. All the tailenders that we've seen from England so far have scored against their bowling lineup. And even somebody like Harry Brook, who's not a tailender, he seems to have dealt spinners really well. While the others have been struggling, he's been the one guy who's been picking them. I think he's got a very good technique. He's got a very good technique backed up with very good shot selection. So he makes smart decisions and he gets into positions early. Again, we spoke to him when he was here as well. He has this really low crouching position for a tall guy, gets really low to pick up length for the spinners, and he gets into position either front or back well before. So he's got time in case the ball does something off the pitch. And again, he, I think, was the one who started picking up Brar with a lot more confidence. On the other side of it, you just asked about the tail enders for England. Now, that seems to be a problem for Pakistan in the recent past. We struggle to clean up the tail quickly, and they'll just allow them to set in. Now, that has to do two parts, with the fielding positions as well, and with a few loose deliveries that come your way. Wasim Judia was getting the ball to reverse extravagantly. Just thought his line to begin with to Wood was starting middle and leg and then going down further. I think just coupled with a couple of things. Now, that 50 runs that we talk about, where Pakistan probably will think that they were short by, and now England have that lead. Yes, they've got it down to 29. Could be the difference in the game. And then Robinson's got about 27 of those. Wood's got about 35 of those. And the last 3 wickets got more than 70 odd runs. Something for Pakistan to think about. Yes, they don't have their full strength bowling side, but when you pick up the top order, you back yourself with your aggressive wicket taking attitude and your field positions, and then you expect your bowlers to deliver on those plans as well. Over 400 runs for Harry Brook in this series. Like I said, he loves playing in Pakistan. He's dominated the spinners, plays on all sides of the wicket, and he's just an absolute star in the making for England. Top performer of the day. Top performer, brought to you by Inverix Solar Energy. Yeah, well, I can promise you've seen some of these shots many times before in this series. He's so good against the spinners, as we've just been saying. He comes down the pitch well, but also when he stays in the pitch, stays at the crease, he can hit the ball just as hard. He's got such good timing. And I think he's also learning very quickly the art of game management. So when to go hard, when to defend, when to take advantage. I mean, it's a really, really good innings yet again. As I say, third 100 of the series for him at a very good rate, given the circumstances. And it was the major factor in getting England that lead. Well, I can tell you, I don't know if you'll be chuffed about this one, but he's overtaken a certain David Gower in this list for most runs for England in a test series in Pakistan. Okay, can I weep now? No, tissues? Anyone tissues? But yeah, I mean, just look at that record. 400, over 400 runs, averaging 93. Whereas David Gower, he was averaging 112 a route. Quite extraordinary. Quite extraordinary for a record that stood just under 30 years.
And a young Harry Brook. Let's not forget, I think Atherton mentioned this on commentary as well. Back in the day, the England teams did not tour the subcontinent that much, even particular Pakistan. So for David to have that record in the span of the cricket that he plays in subcontinent, obviously Harry Brook's probably going to exceed that outstanding record. So you've had that for just about 30 years. So what you're saying is the only reason I've held that record so long is that no one came here to try and beat it. No, but Harry, let's be serious. Harry Brook has had such a good tour. And he has such a big future ahead of him. It means actually one of the side effects of all this is that England have selection problems when they get home for next summer, just to see who gets in the side now. Well, there's an embarrassment of riches when it comes to England, and whether it's the white ball format or the red ball format. But yeah, that was the top performer of the day. Top Performer, brought to you by Inverix Solar Energy. Abrar Ahmed was once again in the mix of things for Pakistan. He's already got 15 wickets in this series. Let's revisit the England wickets. Fall of Wickets, brought to you by Inverix Solar Energy. Yeah, the day started with another beauty of a delivery. It was to Ben Duckett. He hesitated to review that, was given out, and then this beauty again. Joe Root, back-to-back wickets for Noman Ali. Good catch to his left ankle for Salman. Have a look at that. Anything you say about this young guy, and he always does one step better. It was a needless run out between Brook and Stokes. The captain Azhar Ali put in the effort. They thought he was going to the boundary, but then chucked it back in. A bit of hesitancy between the run-outs, running between the wickets, and then third umpire decided Stokes had to go. LBW shout. It was a reverse that got going for Wasim Jr. He picked up a wicket, the first of his test career, and the left-hander then came down. It was a good catch. Abdullah Shafiq stuck his right hand out, timed his jump perfectly, and then it was Abrar was in the mix again. And Salman Agha, no, that was Abdullah Shafiq again. Big shot. So Ollie Robinson decided to come down, have a big hoik. Abdullah Shafiq again has a good pair of hands, judges the ball well. And finally then, that was Robinson to Abrar. That was his fourth wicket of the day. Fall of Wickets, brought to you by Inverix Solar Energy. Now, I asked this question to Mohammad Yusuf, who was earlier on here in the show, how much he thinks Pakistan will be comfortable with when it comes to runs. Let's find out from the experts as well. Have your say, brought to you by Inverix Solar Energy. Right, Rooj, what do you think Pakistan is going to be comfortable with in terms of total? I mean, remember England has to bat last. Yeah, I think firstly Pakistan is obviously looking at this 29 to get away with, to start off with 0, and then look. Mohammad Yusuf said about 300, and I think what he mentioned was key. You need enough runs to put England under pressure, something that they feel is slightly out of their reach. Surely they're going to go for the win one way or the other, and in trying to get as many Pakistan get. It'll be difficult because they've got some good spinners as well. Rehan, I thought, was getting into a good rhythm. Robinson, if the ball was reversing, as we saw with Wasim Jr., will be difficult to tackle. So anything over 300, and Pakistan should then back themselves on a slow, low turn on the fourth innings when England come in. I mean, do you agree with those thoughts, David? Because the one thing with England is that because of their approach, I think you're never really sure how much is going to be enough. Because of the way they play, the fact that they always go for the win, how does Pakistan know what they're going to be comfortable with? They don't know. I think the key thing actually to me is the pitch, because lots of things get said about pitches, and a lot of it's repetition. What we saw in Multan was a pitch that got better even as the game wore on. What we've seen here today is not the expected turn, for instance, that I thought might happen. So I'm going to have to defer to local knowledge on the pitch itself. If in 2 days' time it has crumbled a bit and there's more turn, then 300 gives you a really good option as Pakistan, because it just makes run scoring that bit harder. If the pitch somehow, if most of it survives intact, then England love a chase. I mean, that was the thing about the summer back in the UK. They said, give us a chase, we'll take it on. And they will give it everything. I mean, they will go down, I'd imagine, well, they'll have to go all the way because there's so much time left in the game. So I think that 300 total target is about the ballpark, is about the right figure to be aiming at. Obviously, anything more than that, and Pakistan will fancy their chances even more.
Yeah, they'll always go for the chase. That 378 against India as well was chased down in the summer. So it's been brilliant from England. And that was Have You Say. Have Your Say. Brought to you by Inverix Solar Energy. All right, thank you so much, DG and Aruj. It's always great to have you guys here. And of course, we'll be meeting for day 3 of this test match. It's Dafa News presents KFC Pakistan versus England series. And we will be joining you live at 9:30 a.m. from National Bank Cricket Arena. Well, the good news is that we will get a result in this test match. That's why we're all looking forward to tomorrow. Today was an interesting one, but it definitely belonged to somebody like Harry Brook. From here until tomorrow, it's goodbye. Must be out. First ball. That is absolutely lovely. Beautifully bowled. Another 6 in the book for Harry Brook. A lovely, easy player, isn't he, Harry Brook? Slashes away for more. Well, Harry Brook's love affair with Pakistan continues. Is it going over? Not on this pitch. And gone straight to mid-wicket. A bit of a hack. Gets through, and that will be a half century for them folks. What a catch that is, one-handed. Now this should be taken. Well, that's a great shot.